हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। आप सब कैसे हो? होप यू आर फाइन एट योर प्लेस। उम्मीद है कि आप अपने घर पे अच्छे से होंगे। लेट्स स्टडी टुडेज लेक्चर हो क्लास यूकेजी, सब्जेक्ट इंग्लिश एंड चैप्टर नंबर 5। टॉपिक इज साउंड ऑफ आई and this is lecture number 1. So before starting new lecture, let's revise previous lecture. Okay students, so take out your previous work. आपको अपना पहले वाला वर्क निकालना है. Okay, so students, this is our previous lecture. ये हमारा previous lecture है and in our previous lecture we have done revision of sound of E. हमने sound of E की revision की थी and I have given you this work for 2 days. I hope you have done it. मैंने आपको ये वर्क 2 दिन के लिए दिया था. उम्मीद है कि आपने कर लिया होगा. So let's start reading. TREE TREE tree. Tree. Tree means पेड़. NEST nest. nest. Nest means घोंसला. GREEN green. Green. Green means हरा. RED red. Red means लाल. BELL bell. bell. Bell means घंटी. WELL well. Well means कुआं. LEG leg. Leg means टांग. PEG peg. Peg means clip, जो हम कपड़े सुखाते वक्त लगाते हैं. ओके स्टूडेंट्स, आई होप यू हैव लर्न ऑल दी स्पेलिंग्स. उम्मीद है कि आपने ये सारी स्पेलिंग्स लर्न कर ली होंगी. सो लेट्स स्टार्ट आवर न्यू लेक्चर. सो टेक आउट योर इंग्लिश नोटबुक स्टूडेंट्स. सो first we will write our format, and format you have to write yourself. Okay students, and in today lecture we are going to start new sound. Okay, आज हम अपनी नई sound start करेंगे, sound of I. Okay, so first we will write format. Write down date first. आपको अपनी date लिखनी है बेटा. DATE date. Date means दिनांक. Now put dash on second line. Second line पे dash लगाना है and this side you have to write down date. इस side आपको date लिखनी है. Okay students, and this side write down capital C dot capital W. C means class, W means work. Class work, कक्षा कार्य. Then in second line write down day. Again capital D. आपको दोबारा से कैपिटल D लिखना है. DAY day. Day means दिन. This side you have to write down, put dash first, then you have to write down day. Okay, यहाँ पे आपको इस साइड दिन लिखना है. Okay, and every letter you have to start from the corner. आपको हर एक लेटर कॉर्नर से स्टार्ट करना है. Okay students, now our topic is sound of I. Today what we will do, आज हम क्या करेंगे, sound of I. Write down capital S O U N D. Sound. Again leave some space. OF off. Again leave some space, थोड़ी सी जगह छोड़नी है. Then write down I. Sound of I. So first word write down KID. Kid.
KID kid. Kid means बच्चा. Kid means बच्चा. Then again write down KID. KID kid. Kid means बच्चा. Kid means बच्चा. Then write down next word LID. Lid. LID lid. Lid means ढक्कन. Lid means ढक्कन. Now next word write down. Again you have to write down same word. आपको दोबारा से same ही word लिखना है. Write down LID. Lid. Lid means ढक्कन. Now next word write down HID. Hid. HID hid. Hid means छुपना. Hid means छुपना. Again same word HID. Hid. Hid means छुपना. Hid means छुपना. Now next word mid. 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 MID mid. Mid means बीच का. जैसे जो भी बीच वाला होता है बेटा उसे हम बोलते हैं मिड. क्या बोलते हैं? मिड. जो बीच में होता है, कोई बीच में कोई चीज रखी है या फिर बीच में आप खड़े हो किसी के सेंटर में, तो उसको क्या बोलते हैं हम? मिड. अगेन MID. मिड. मिड मीन्स बीच में, बीच का. ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे? मिड. नाउ वी विल राइट आवर होमवर्क. राइट डाउन कैपिटल H dot capital W. H means home, W means work. Home work, गृह कार्य. Now put dash on second line. Second line पे dash लगाना है. Then write down learn. 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 You have to learn all these spellings. ये आपको सारी spellings learn करनी है. Okay students. Now rewrite. Capital R E W R I T E. Rewrite. Rewrite the THED C.W twice. TWICE twice. This work is for 2 days. ये 2 दिन का वर्क है. ओके स्टूडेंट्स, एंड यू हैव टू लर्न ऑल दी स्पेलिंग्स. आपको ये सारी स्पेलिंग्स लर्न करनी है. ओके बेटा, नाउ वी विल रीड इट. अब हम इसे एक बार पढ़ेंगे. एंड कीप योर फिंगर्स. KID किड. KID किड. किड मीन्स बच्चा. किड मीन्स बच्चा. बच्चे को क्या बोलते हैं? किड. LID लिड. LID लिड. लिड किसको बोलते हैं? ढक्कन को. HID हेड. HID हेड. हेड मीन्स छुपना. MID मिड. MID मिड. बीच का या बीच में, उसको हम क्या बोलते हैं? मिड. ओके स्टूडेंट्स, so do your work in good handwriting and please write letters in proper lines. Okay students, if you like this video, please press like and subscribe this channel. Thank you.